Hey, Hello. Welcome to the 27th episode of Bitcoin Hub. मेरे साथ है निहाल, मैं हूँ भाविक। आप सबका स्वागत है जो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं हर संडे को। सो मोस्ट वेलकम। हर बार की तरह आज भी काफ़ी कुछ बिटकॉइन के रिगार्डिंग डिस्कस करना है। सो स्टे ट्यून्ड। हाउ आर यू निहाल? I'm fine, Bhavik. आप बताओ, या फेस्टिव माहौल है, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? फेस्टिवल माहौल, Happy Dussehra, by दशहरा the way, ख़त्म। for everyone celebrating. सबको दशहरा की शुभकामनाएं। अभी फेस्टिवल सीजन चल ही रहा है शायद, या अभी तो बहुत कुछ आएगा। Yeah, एंड जो भी कोई पहला देख रहा हो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करो। एंड फीडबैक्स आर ऑलवेज ओपन। yes. सो बिना And कुछ the देरी के, या हाँ, मैं बोल रहा था कि the idea of doing live sessions is for encouraging interaction. And अगर आपके या कोई questions हो, कुछ आपको पता करना हो, you have some doubts, please feel हम्म free to reach out. The comment box is हम्म open, and हम लोग are here to answer your questions. यस 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 चलिए, without ओके। further ado, we will start our session today. Um, Era. Uh, I have given up. I personally have given up on the price action. We don't know what happened and या कैसे, because आप ये देखोगे October 10th को we again went back to 58,000 and the 58,000 gang. ऐसे एक meme है Bitcoin space में या where 58,000 is a constant. So वहाँ के लिए it wasn't there overnight. बस एक छोटा या temporary dip था and again it shot back to 62, 63 range. यस 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 तो आपका क्या ओपिनियन है प्राइस के बारे में? जस्ट आई मीन जस्ट फॉर ओवरऑल ऑडियंस के कुछ बताएं। Yeah, like I think we are into 7 or 8 months of consolidation after like एक all-time high in March, हाँ, April, May, June, July, August, September, October. So yeah, 13 आज ही तो all-time high लगा था। 7 महीने आज कंप्लीट हुए हैं। Today is 13th October, right? या So या yeah, 13 मार्च को हाई लगा था। I think 13 मार्च around. So ये रहा 7 महीने 73। हो चुके हैं, 7 हम्म, months. So I think it is the longest consolidation. और प्राइस एक्शन से देख के लाइक वी डोंट नो, अगर प्राइस ऊपर जाए तो भी बढ़िया है, नीचे जाए तो और बढ़िया है। बिकॉज वी या नो बिटकॉइन विल बी द ग्लोबल रिजर्व करेंसी। जिसको या बिटकॉइन का आइडिया है, जो बिटकॉइन समझता है, उसको पता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। सो बिटकॉइनर्स तो दोनों तरफ खुश होते हैं। या बट या बट आई एम बुलिश, लाइक पर्सनली, लाइक आई एम फीलिंग बुलिश वाइब्स सिंस इट इज लाइक, देखो ना, ओल्ड ज़्यादा ही चल रहा है बाकी सबके कंपेयर में। तो अब 6 महीने से इधर जो 6 महीने में एंटर हुआ है उसको लग रहा है कि यार मेरा कोई रिटर्न नहीं आया। बट लाइक या बिटकॉइन चेक्स पेशेंस। ये कोई क्विक करेक्ट गेम नहीं है। जो इसको समझता है वही बिटकॉइन को समझ सकता है अच्छे से, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कर सकता है। एंड बिटकॉइन इज द प्रॉफिट, राइट? लाइक यू डोंट सेल योर बिटकॉइन एंड कन्वर्ट टू रुपीज और डॉलर। बिटकॉइन या इज द प्रॉफिट, लाइक। सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट है। यस Again, as usual, disclaimers, this is not an investment advice, but यस a lot of Bitcoiners, including us, strongly believe that it is a very good savings instrument because its rules are intact. ऐसे कोई regular modifications नहीं है, and चंद लोग रूम में बैठ करके they do not राइट decide the future of Bitcoin. It's done राइट through global consensus, जिसका बहुत rigorous method होता है, and कोई भी अगर agree नहीं किया then either you can opt out of Bitcoin or you go with the flow of the entire ecosystem. राइट But yeah, khair, in terms of price action, my opinion is things haven't changed much. आपका March 13 में was 73,000 and lowest अब तक का बना है 54 इस साल में 53. So it's hovering between this range and it is frustrating. आप Reddit पे भी comments वगैरह सब देखोगे तो लोग बोल रहे हैं कि you know I'm frustrated, अभी निकलना है, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, there is no action. That is exactly when you are not supposed to leave and राइट 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 because this is exactly what the big players like your BlackRocks and the Fidelities of the world they want. And ताकि retail frustrate हो, they sell their coins in the open market and they can buy it for cheap. So it is a play out, like it happens पहले भी हुआ था 2008-9 के टाइम पे भी, अभी भी हो रहा है. There's nothing new. Stimulus वगैरह सब, and everyone's looking forward to the US elections.
There are हम्म scenarios which will play out, but either scenario will cause excessive printing and handouts given to a lot of people. So हम्म that will cause a lot of money in the system. And this is a long term thing. 6 months to 1 year में आपको देखने को मिलेगा. अभी, and by the way, we are currently in a bull run, and we are not expecting and hoping for some miracles. But what has been proven before is that towards the end of every bull market is when the price does crazy things. It can go up, down, sideways, whatever. So yeah, that's the overall gist of the price action. To be fair, हम्म there are many minor developments. Minor नहीं कह सकते. There's one thing which वही happened तो this week, which obviously हम्म hordes में people came, and we will discuss that in a bit. But before that, this is something which is extremely concerning for the Indian context and Indian people who are viewing this. यस 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 Uh, यहाँ पे हम्म इंडिया में स्पेशली वी हैव अ हैबिट ऑफ गिविंग out our information very freely. That information includes your name, address, phone number, all your details, basic details, जिससे आपको track किया जा सके, जिसको आपको, that information can be misused anyway. We हम्म spoke about the importance of this in the previous episodes, but this particular one is extremely concerning because you are depending on a system where you are trusting them, and ये है with your health records, with your overall physical health, and how and where to find you, etc. is given. So यहाँ पे Star Health हम्म Insurance करके it's one of the biggest insurance firms in India, यस and they this CISO, I think, उन्होंने अपने ही कंपनी का डेटा allegedly has sold it for a few $1,000s, and yeah, it's openly available to everyone to see. And जब भी आपको details चाहिए of anyone, it's 7.24 terabytes का and almost 31 lakh, नहीं, कितने था ये, 3 crore, yeah, 3 crore 12 lakh 16,000 customers का data, it's there. ओ And And he is आपका claiming कि इन्होंने डायरेक्टली मुझे इन्होंने बेचा है, directly राइट? मुझे इवन द yeah. ओके And ये नाइस Telegram का एक bot है where you have all these sensitive information called Aadhaar card, PAN card, photo, detailed medical health reports, residential address, contact details, claim details, amount details. So what happens in this is, if a bad actor has to contact you, or he knows that you are terminally ill, he can come to you, he or she can come to your house, based on this data. It can be manufactured and engineered in such a way that ऐसा लगेगा कि स्टार हेल्थ का ही बंदा आ रहा है, राइट 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 to be giving and caring, and last में राइट आपका जो भी है valuables हड़प लेंगे. So राइट that's और the 90% लोग इसमें फंस सकते हैं, लाइक हम शायद yeah, बच जाए, पर yeah. जिसने No, कोई so, स्टार इंश्योरेंस का ले रखा है, हम कभी चेक तो करते नहीं है, ना ही कभी उनका correct, लाइसेंस मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, तो इट्स वेरी absolutely. कंसर्निंग, राइट? So the people who are hooked on to your Twitter, Telegram, उनको सब ठीक है. They know the information क्या हो रहा है leaks के बारे में. This came out, like पहले तो leak ये Twitter पे हुई थी, like someone broke the news on Twitter. 2-3 दिन के बाद में the mainstream news covered it. And that is something extremely concerning because पहले information news यहाँ पे आती है, and then after filtering it goes to your regular mainstream media. So yeah, please be aware of all such things. Be very private in, and anything like random restaurants में जाकर के first thing they ask you is, sir, can we have your number? Do not give your number, and do not give anything which, अगर आपको suppose आपको burger खरीदनी है, why do you need to give your number for that, or your any sort of detail? It's just lame. वही तो। एंड एक वन मोर थिंग, लाइक वेयर आई लिव, Yeah. जहाँ पे रहता हूँ मैं, वहाँ पे लाइक मैं नाम भी ले लेता हूँ, रिलायंस ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में जाता है तो हर बार वो नंबर पूछते हैं। आई थिंक Exactly. और भी 2-3 है, काफ़ी, हर कोई पूछते थे, मत दो, कभी भी अपना फ़ोन नंबर मत दो। उनको बोलो जो स्किप करो, राइट? Yeah. वो बोले कि नहीं नहीं ऑफर, बोला नहीं चाहिए ऑफर, परेशान हो जाओगे एंड अगर फालतू के, देना तो भी है तो गिव अ बोगस नंबर, ऐसा आपका कुछ राइट भला नहीं वाला है उनके, लाइक फ्यू 100 राइट पॉइंट्स लेकर के, उसमें कुछ नहीं वही होता. तो। उसमें मत फंसो ना फालतू के, मतलब इन सब, पहले तो फियाट सिस्टम में फंसे और अब तो ये बोनस के पॉइंट्स में फंस रहे हैं लोग, पता है ना? लाइक या फियाट में फंसा दिया, अब नए नए पॉइंट्स, मेरे पॉइंट्स कलेक्ट करते रहता है। लाइक जस्ट बिटकॉइन कलेक्ट करो, सेट्स कलेक्ट करो। या इट्स अ वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड, मोस्ट वैल्यूएबल। नॉट अ पेड शिल, बट देयर इज अ कंपनी इन इंडिया जहां पे आप उसमें से स्पेंड करोगे तो आपको सैट्स मिलेंगे.
So there is a service available in India. आपको बस थोड़ा हम्म गूगल सर्च करने की जरूरत है, and then you'll find that. हम्म। चलिए, next thing राइट। is the idea of penalizing customer for not maintaining average balance in bank account is equivalent to making poor more poor. This is the banking growth story. हम्म And किसी हम्म ने एक ऐसा केस स्टडी भी दिया है कि my mom's account got charged 5,000 in 9 months for shortfall of 15,000 something. They do not even pay interest of rupees 1,000 if we have those 15K in the account. Why are the odds so much in their favor? They win either ways. राइट। So this is, again, banking system in itself is shaky in all the areas of the world. And ये तो धरा, like it's a outright extortion कह लो. If, and ये हम्म minimum balance का कुछ नहीं है, इससे लेना देना नहीं है. Minimum balance हम्म 10,000 अगर आप रख भी रहे हो, even after that, हम्म। if you miss a few days, then you are being charged and penalized for it. So this is a way for banks to extort money, is what I think. And this is राइट a राइट, lame thing. आपको डेफिनेटली। minimum balance रखने की जरूरत नहीं है. It's your service, for God's sake. And अगर आपको हम्म। नहीं रखनी है, then close the account. And that's the best thing. Agar bank account closures start increasing, then banks will change their own policies. So that's the only way we can fix this as a collective. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ ऐसे 2-3 बार हुआ है, होता उसके बाद हुआ है। मैं गया बैंक एंड आई मैं टोल्ड देम कि नहीं चाहिए, एंड वो बंद अब करने के मैं लिए ही भी रेडी। करूँगा। हाँ, रेडी नहीं है ना, लाइक वो बोल नहीं करेंगे ना बंद। नहीं, उनको बैंक मुश्किल अकाउंट से। बंद करने से भी प्रॉब्लम, लाइक डू यू हैव एनी इश्यूज? मेरा इश्यू यही है कि आप चार्ज कर रहे हाँ, हो ऑन द मनी हाँ, दैट आई हैव इन माय ओन बैंक, एंड हाँ, देन उसका कुछ जवाब नहीं आता, दे कीप हाँ, पुशिंग एंड डिलेइंग इट। इसलिए एक राइट, बार लाइक गया। 10,000। हाँ, राइट, राइट। वही, 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 नहीं बताओ। नहीं नहीं, वही, आई एम लाइक हाँ, वो, हाँ, दैट्स व्हाट ना, लाइक अननेसेसरी चीजें, कंप्लायंस, एक्स्ट्रा कंप्लायंस, एंड उसके बावजूद हुँ, वो सब करो आप, ओके ठीक है, आप जो वो मांगेंगे आप दे रहे हो, उसके हुँ, बावजूद तुम्हें एज अ कंज्यूमर सिर्फ ये चाहिए कि अपना बैंक अपने अपने पैसे रखो, दैट्स ऑल। हुँ, वो भी हुँ, अगर हुँ, उस पे भी आप चार्ज कर रहे हो, एक्स्ट्रा चार्ज कर हुँ, रहे हो एंड ऑल दैट, इट्स हुँ, जस्ट हुँ। अनोइंग। बहुत बार हुआ है, मतलब मैं बंद कराने तो नहीं गया, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि यार देखो, हर 10,000 का लिमिट है मेरे अकाउंट में। तो यार वो या 10,000 से नीचे चला गया, ₹5 कम गया था, लाइक। सो हम्म, 1 वीक तक रहा तो उन्होंने चार्ज मार दिया लाइक ₹60-70। और करेक्ट, बाकी कोई है वो 1000 अब इतने सारे बैंक अकाउंट है कि कोई कोई तो यूज़ भी नहीं करते। तो राइट, उसमें कुछ पड़े थे 500-1000 रुपए। वो मैंने देखा तो पिछले 1 साल में खत्म होके ज़ीरो हो गए। देखे मैंने कि हर बार चार्ज लगाए जा रहे हैं वो। हम्म, सो मैं सो अब ये लगता है कि अब इसको यूज़ ही नहीं करना। बट पैसा तो गया ना अपना फालतू, 1000-2000 या रुपए गया, क्या मतलब है? या वही एंड सैड जो सोल है। बोलते हैं कि जीरो जीरो मिनिमम बैलेंस अकाउंट खोल लो, नहीं बहुत कम खुलता, है, एंड उनके दूसरे नहीं खुलता, सर्विसेज ठीक नहीं रहते। नहीं खुलता। एंड ऑल योर मेजर बैंक्स ऐसा कोई नहीं, आईसीआईसीआई आप देख लो, इट्स मिनिमम हुँ, हुँ, 10 हुँ। सेविंग्स, नॉर्मल अकाउंट में भी 10,000 मिनिमम 10,000 वो मिनिमम हो गया अभी। है। या 10,000 50,000 ये सब मांगने लग गए अब। बिटकॉइन खैर, में कुछ नहीं है, अपना आराम से बैलेंस रखो। कोई या मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है बिटकॉइन में, क्या ब्यूटीफुल सिस्टम है। और फीस या भी कम ही चल रही है, फीस कम ही चलेगी। लाइक इवन इवन इफ यू पे द फीस ना, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन की फीस भी तुम पे करते हो ना कुछ, तो भी वो इनसे बैंक से सस्ता ही पड़ेगा, राइट? राइट, क्योंकि एक तो करेक्ट, मतलब मनी भी वैल्यू लूज़ नहीं हो रही है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कोई चार्जेस नहीं है। लाइक वी आर हम लोग बोल रहे हैं कि बिटकॉइन की फीस हाई है। इवन अगर ज़्यादा हाई रहेगी, अगर इतना यूज़ आता ही है कि बहुत ज़्यादा फीस चल रही है बिटकॉइन की, तो कुछ ऐसे लेयर सॉल्यूशन आएँगे एंड हम्म, देन स्टिल इट विल बी चीपर फॉर अस। राइट। बट ना ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं लेयर टू हुँ, सॉल्यूशंस, इफ यू हुँ। डिग क्या? डीप इनटू इट, आपको लाइटनिंग है, यू हैव योर फेडिमेंट्स, यू हैव योर राइट, कैशू, राइट, राइट। हुँ। बहुत सारे तरीके हैं इन हुँ, व्हिच हुँ। यू बट कैन लाइक लो। लाइक इट्स नॉट स्केलेबल, राइट? लाइक अभी इतना स्केल नहीं हो पा रहा है, लाइक बट इट विल ग्रो, लाइक जैसे लाइक वी मेबी लेट्स अज्यूम कि 1 बिलियन ये लोग यूज़ कर पा रहे हैं लाइटनिंग, राइट, राइट? तो राइट, भी बहुत सस्ता ही रहेगा, लाइक वी विल हैपीली पे द या आई थिंक, आई एम श्योर ट्रांज़ैक्शन विद फीस। टाइम बदलेंगी चीजें इन टर्म्स ऑफ हाँ। दैट। Now, coming to the banking thing, we will cover this news. हुँ। Abhi, I'll just focus on हुँ, हुँ। that. This has हुँ, हुँ। happened in the last few days, where हुँ, MicroStrategy ka stock has done exceptionally well, हुँ, and people are alarmed कि ऐसे कैसे हो रहा है. So, for those who are aware, GameStop का ऐसा scene हुआ था during 2020, and that was हुँ, one of the very छोटू companies, उसमें ज़्यादा कुछ था हुँ, नहीं.
Like it was not doing financially well on records. उनके पास they were like even their own business model was not intact and it wasn't strong for it to hold. Hmm. But Hmm. there was one person, Hmm. Deep F value के नाम से, Hmm. and I don't know his exact name, याद नहीं आ रहा. So Hmm. he started buying stocks of GameStop, and then पूरे retail को अपना analysis दिखाया. He used to cover के every day he used to purchase some, and ऐसा Hmm. करते करते he told अपना community बना दिया था उसने. And crypto kitty, oh no, what is that kitty, some kitty, Hmm. yeah, I sorry. don't know. Huh. So he did this, and all the Okay. retail followed, and they propped up the price. Now, इससे क्या हुआ? Okay. The institutional people who were shorting GameStop का stock, they got affected severely. So it Hmm. became your David versus Goliath wala scene where your retailers Hmm. are challenging your status quo, hedge fund managers, वगैरह वगैरह. There is a Hmm. movie based on this on Netflix. You can check it out. It's called GameStop. The story. Yes, Hmm. nahin, Dumb Money. Dumb Money movie है. So if you can watch that, you'll get a proper understanding of हुआ क्या था. But anyways, coming to the point, MicroStrategy Hmm. has a robust model. They are a software intelligence, business intelligence company, and they have been in the space for ages, like 1990s, I think. Uh, and abhi, out of the last few years, 2020 tak, till they adopted the Bitcoin standard, they were considered a zombie company, or at least Michael Saylor says so, where they do Hmm. not, मतलब उनका चल रहा है, like they are doing things on a regular basis, business as usual. There has been no exceptional growth, etc. And तब अगर आप देखोगे August 14th 2020 को, their stock price was $14.6. Now, after that day, they started, Michael Saylor ने announce किया था कि they will be buying Bitcoin on a regular basis. They find meaning and value in it, and उसके चलते they started buying, and they have close to 230,000 Bitcoin as of today. Above that, I'm not sure of the exact number. So since then, Hmm. almost 5 years हो गया, their stock price recently it hit 204 US dollars, from $14 to $204 in a span of 5 years, less than 5 years, 4 years. 4 years, yes. Yeah, like he started buying on August 2020. Correct, Michael correct. Saylor. Hmm. And all of this has happened entirely because of okay, 95% because of Bitcoin and Hmm. 5% because of their business. Because Hmm. of them adopting the Bitcoin standard, they are the only Hmm. publicly listed company who have done this, and from the beginning. And Hmm. they've given a proper case study, and they have Hmm. spoken about the benefits of adding, and it has reflected on the price. सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि कर दिया, अब records में books में छपा दिया and stuff, and there's nothing, no proof Right, के right, right, right. so 2022 में obviously he faced a lot of flack because the market was like Bitcoin price was tanking. Then he aggressively bought a lot more. And by 2024, we know what happened. All the ETFs came in, it became legitimate, Bitcoin became legitimate, and we saw the price shoot up. Uske baad mein, when Bitcoin price shoots up, MicroStrategy, which holds a lot of Bitcoin on its balance sheet, that also increased. So it's a proper money glitch, agar aap dekhoge, to, which is found, which is amazing. I'd say it's a case study for a lot of people. And what happens then is, recently October 11th को ही उनका था, the end game is, उन्होंने बोला कि end game is to be the leading Bitcoin bank Hmm. or merchant bank or a Bitcoin finance company, जो भी नाम देना चाहो. Hmm. If we end up with 20 billion of converts, 20 billion of preferred stock, 10 billion of debt, and say 50 billion of some kind of debt instrument and structures instrument, we'll have 100 to 150 billion of Bitcoin. The Nice. company trades at 50% premium. With more volatility and ARR, we can build a company that has 100% premium to 150 billion of Bitcoin, and build a Hmm. 300, 400 billion company with biggest options market, biggest equity Nice. market. And then we basically start to chew into the fixed income markets. And we keep Nice. buying more Bitcoin. Bitcoin is going, and unka manna hai कि Bitcoin is going to do $1 million per coin. And uske chalte, Hmm. MicroStrategy will become $1 trillion company. So this is Nice. his end goal, and this we discussed ke itna khareed ke karoge kya. And this was very clear when recently there was a discussion between him and Safdien,
in Right. the one of the interviews. Hmm. It divided a lot of people, where Hmm. Safdien was completely working on a Bitcoin standard model, but Hmm. Hmm. Michael Saylor was telling it, "Okay, I mean, I understand the whole philosophy of Bitcoiners, but at the end of the day, you are a business, you want to make money. There will always be people who need money, who want to borrow. उनका क्या करें?" So that's what this is his idea of turning Hmm. MicroStrategy from a software company to a Bitcoin bank in the future. कब होगा, कैसे होगा, we don't know, but this is his vision. Right. So Hmm. इस पे आपका क्या कहना है? What do you think? Yeah, I also watched that episode with Sefidin. So 4 साल में like they are on the Bitcoin standard. So S&P में I think MicroStrategy is the highest performing, even more than Nvidia. Nvidia gave something somewhere around 930%, and you like 4 साल में रिटर्न दिया है, इसने दिया 964%. Yeah, So like now I think anyone should hold Bitcoin. बट अगर तुम्हें उससे भी ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो लाइक इन इंडिया लेट्स एज्यूम रिलायंस, तुम रिलायंस इज गिविंग अस 10 to 15% दैट रिटर्न एवरी ईयर. सो अगर रिलायंस अगर अपने बैलेंस शीट में रुपीज़ की जगह 80-90% बिटकॉइन को होल्ड करती है शुरू के 2-3 साल के लिए, इट विल बी हार्ड, बट राइट लाइक इफ दे बाय बिटकॉइन एट द रॉन्ग टाइम और इवन एट द टॉप. बट अगर उसके बाद लंबे टाइम के जाता है तो मुझे लाइक बिटकॉइन का रिटर्न मिलेगा प्लस मुझे रिलायंस का रिटर्न मिलेगा. सो लाइक आई वुड रादर वांट टू होल्ड रिलायंस शेयर. सो देखते हैं इंडिया में कब होता है, बट इट इज़ लाइक आई थिंक एवरीवन विल डू दिस. सेलर का भी यही कहना है कि सब लोग करेंगे और करना ही चाहिए, बिकॉज आप yeah, अपना जो कैश रिजर्व है वो क्यों कैश में फियाट में क्यों रख रहे हो जिसको जो आराम से 10-15% से डिवेल्यू हो रहा है. एक तो वो right. है लाइक जैसे रिलायंस के पास भी समथिंग करोड़ रुपए रहते हैं, सारी कंपनी के पास कैश रिजर्व रहता है. तो एक तो ये कि वो 10-15% से डिफ्लेट हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, और अगर तुम बिटकॉइन में आओगे तो वो 30-40-50% से एनुअल इंक्रीज हो रही है. सो आपको 50 से 60% का एक वो गैप मिल रहा है ज़्यादा. यू आर बाकी लोग से कितना एडवांटेज मिल रहा है, तगड़ा एडवांटेज मिल रहा है, राइट. सो Yeah. आपको आपको करना चाहिए, और जितना जल्दी करेंगे उतना सही रहेगा. इंडिया में अगर कोई छोटी सी कंपनी कर देती है तो लाइक आई विल बी बाइंग ह्यूज शेयर्स ऑफ दैट कंपनी. वही ना, I think everyone in India is being extremely cautious, which is absolutely fair. There is nothing wrong with it. But जब the floodgates will open, then we'll see राइट. a lot of people jumping into it. And from the developments which are happening, again, ये आपने जो Reliance की बात कही, same thing. I think Geo Finance is on track. They want everything on paper, सब कुछ record and do it the proper way. Now they partnered with BlackRock, and then by राइट. 2026 tops, you will see a lot of Bitcoin ETF offerings there. अब उससे क्या होगा? अभी जो माइक्रो स्ट्रैटेजी एज अ इंडिविजुअल पब्लिक कंपनी करने की सोच रहा है, रिलायंस तो ऑलरेडी पावरफुल कंपनी है ही इन इंडिया. राइट. राइट. Now राइट. with this, they will get actual physical custody of Bitcoin. खैर, no problem. It's आपके customers का है, but at the end of the day, you're holding those राइट. keys, राइट. राइट. so राइट. it's राइट. your, राइट. and that is what will make them, that divide of wealth between the poor people or the regular investor mindset and the company like a Reliance or a Adani or whatever. So we apply, they do this. देयर इज रिस्क लाइक दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट. रिस्क Of है course, उसमें. हाँ, हाँ, रिस्क तो हाँ. है ही. मैं बोल रहा हूँ ये या. मॉडल रेप्लिकेट करने का ना, जो यूएस में चल रहा है. आई एम श्योर राइट. ऑल ऑफ द बिग प्लेयर्स इन इंडिया, दे नो व्हाट्स हैपनिंग. दे कीप टैब्स ओके. ऑफ न्यूज़, एंड जो भी आप इकोनॉमिक टाइम्स में भी देख लो, एक छोटे कॉलम में आएगा कि माइक्रो स्ट्रेटजी ऐसी कंपनी है जो कर रही है ऐसा. मतलब that's what their jobs is, like financial analyst and stuff, to make a track of all of this and tell the upper management कि ऐसे ऐसे हो रहा है. And they are aware, they're very much aware of all of this which is happening. And उसके बाद राइट. you see a lot of improvement happening over time. So Bitcoin बैंक बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, maximum 5 years, 10 years, and then you'll see a lot of छोटे institutions or individuals for that matter जिनके पास a lot of Bitcoin है, they will come and do that whole borrowing lending वाला business. खैर, पवन क्या राइट. चाहते हैं? पवन बोल रहे हैं आफ्टर NFTs what will be the next big thing in पवन को crypto थोड़ा market? सा अब दे देते हैं, एक झटका दे. पवन भाई कहाँ घूम रहे हो आप? लाइक आप लाइक ठीक है, अब आपको लाइक यू शुड रीड अबाउट बिटकॉइन.
आफ्टर NFTs व्हाट विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन क्रिप्टो मार्केट? सो पहली बात तो बताइए NFT बताइए। कोई बड़ी चीज है ही नहीं। NFT कचरा है, पोंजी स्कीम है, और क्रिप्टो Yeah, मार्केट भी सबसे बड़ा कचरा है। तो लाइक ये सब में मत पड़ो, लाइक जस्ट फोकस ऑन बिटकॉइन। ये हम हमारे हमारे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हमने भी yeah. क्रिप्टो किया, अल्टकॉइन किया, इथेरियम किया, ये सब किया, बट ये सब में कुछ नहीं रखा। सो या लाइक स्टडी बिटकॉइन, ये सब NFT। बिटकॉइन इज द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, एंड इट विल बी द बिगेस्ट थिंग इन वर्ल्ड। लाइक क्रिप्टो को भूल जाओ। ये सब छोटे मोटे पंप आते रहेंगे, पंप एंड डंप आते रहेंगे। इसमें कुछ नहीं रखा, कोई रियल वैल्यू नहीं है किसी में। ये सब इसकी टोपी उसके सर, वही Yeah, मार्केट है सारा ये। exactly. That is the आई actual definition of crypto. वही है। हाँ। क्रिप्टो, हम्म एनएफटी, ब्लॉकचेन, ये सारे वही हम्म हैं कि कैपिटलाइज हम्म, ऑन पीपल्स गलिबिलिटी एंड फिर आगे या बढ़ो। पवन को उनसे आई विल पैसे। रिकमेंड कि लाइक बिटकॉइन स्टैंडर्ड बुक है, वो पढ़ लो। इफ यू डोंट गेट या द PDF, लाइक जस्ट सर्च ऑन द वेबसाइट, एंड आपको बिटकॉइन स्टैंडर्ड PDF मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो आप कमेंट में ही बता दो, विल सेंड यू द लिंक। जी। एक बार आप वो या पढ़ो, लाइक जस्ट रीड इट फॉर मे बी 1 month, एंड एक महीने बाद लाइक वी विल डिस्कस, विल टेक योर क्वेश्चंस एंड विल ट्राई टू आंसर। या राइट, या दैट्स व्हाट, लाइक अगर एक बंदे को भी हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं तो पर्पस will be fulfilled of the channel. And the idea of this channel, the idea of Bhavik and I, is to encourage people to learn about Bitcoin specifically. Hmm. We are not here to talk about crypto, blockchain, Yeah. NFT, Hmm. वो सारी Hmm. चीजें बस फैड हैं। Hmm. 1 साल Hmm. चलेंगे, 2 साल चलेंगे टॉप्स, और उसके बाद में लोग भूल जाएंगे। Right. And we have seen this happen in the past, and that it has actually happened. इसलिए बोलते हैं Hmm. लोग। Hmm. Right. Anyways, let's move on. क्या है? हाँ, चार्ल्स श्वाब, $9.5 ट्रिलियन वाली कंपनी Hmm. बोलती है, उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया था रिसेंटली, where it shows that half of its respondents plan to invest in Bitcoin and crypto ETFs in the near future by Right. next year. So US equity के बाद में आता है crypto currencies. Now Right. the funny part is चार्ल्स श्वाब का खुद का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। Hmm. I mean खुद का ETF, Bitcoin ETF इंस्ट्रूमेंट नहीं है। Hmm. So Hmm. they are doing the survey, and I don't know why this has happened. Okay, Hmm. they are not aware of what they are doing. But yeah, we Hmm. are seeing a lot of this in the future. Right. Coming to Jeffries, और एक कंपनी है, I think they're a hedge fund or an investment management company. Hmm. Not sure exactly क्या है। उनके चीफ स्ट्रेटेजिस्ट क्रिस वुड ने बोला है कि it is optimal to keep 5% allocation to Bitcoin via Hmm. a ETF instrument. तो अगर आप Hmm. ये देखोगे, this is a global long only equity portfolio. Like they don't plan on, they don't intend on selling anytime soon. And इसमें आप दूसरे various countries का देखोगे। अब इसमें ऑलमोस्ट 6 कंपनी हैं इंडिया के, फ्रॉम इंटरनेट सेक्टर, प्रॉपर्टी, बैंक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनका उनका लॉन्ग टर्म बेट है। दे आर लाइक दे आर नेवर गोइंग टू, नॉट नेवर, दे वोंट बी सेलिंग इट फॉर द लॉन्ग टाइम। आई एम सरप्राइज इसमें जोमेटो आ रहा है, बिकॉज दे Right. वर रिसेंटली लिस्टेड एंड दे आर नॉट दैट ग्रेट इन माय पर्सनल Hmm. ओपिनियन। Hmm. बाकी सब Hmm. ठीक है, रिलायंस, गोदरेज, ऑल ओजीज इन द Yeah. स्पेस। One of them in US, they are investing in Bitcoin through a VanEck Bitcoin Trust. So that's Hmm. something. And 5% is a significant amount. Uh, Hmm. Also, when it comes to this in Dubai, UAE has been This doing a is lot. huge. Yeah, this is a very Right. big in news, which not many people in the TradFi Hmm. space, the regular public, where Hmm. Bitcoin Pay in UAE, there is no capital gains tax. There is no tax on transactions which you carry out between two people, two parties. And the third point is not completely accurate. It says BTC salaries are approved in Dubai. Sure. ऐसा एक recent court ruling आया था between two parties, where the employer had told कि मैं आपको certain number of tokens, like it was a different Hmm. cryptocurrency altogether, certain tokens Hmm. दूंगा in some cryptocurrency, and there's a fixed salary in AED, dirhams. तो dirhams का Hmm. उन्होंने दे दिया, but crypto tokens वो नहीं दिए। That is why Hmm. he went to the court and told कि देखो this employer is being unjust with me. I need a resolution. So Hmm. the UAE courts decided the employer needs to give them the crypto tokens of that particular value. ऐसे नहीं है कि कम दे दिए, ज़्यादा दे दिए types. Okay. So उसके बाद में that paved the way कि
all the cryptocurrencies can be given as salaries also. So it हम्म makes sense. Like it's a regular transaction if you're doing in terms of uh, monetary benefits for goods and services. So these हम्म three things are very important in UAE. UAE में बहुत और भी कुछ हो रहा है. Obviously, there's a lot of crypto nonsense over there which is happening. हम्म Uh, तो उसके अलावा, in addition to that, there's this and there's another Bitcoin Mina करके. There is a conference which is happening in Abu Dhabi from December हम्म 9th to 10th. So this is hosted by Bitcoin Magazine only, I think. I'm not sure. So what this does is वहाँ के a lot of energy companies हैं which are interested in Bitcoin mining space because Marathon already has done this in partnership with one of the companies in Abu Dhabi, energy companies. So this will again pave a way, and a lot of people will know about this. धीरे धीरे, it's a long-term process, and then you'll see a lot of influx in mining operations in this sector also. Dubai also needs to UAE and Dubai needs to reinvent itself. पहले था आपका tourism, पहले था पहले oil ऑयल के ऑयल tourism. यस Tourism से अभी आया cryptocurrencies में. So if you don't keep it open and global, obviously with strict, लाइक punishments for those रियल who are एस्टेट over. लाइक दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन रियल एस्टेट लाइक Correct. टूरिज्म के हाँ, साथ वो रियल एस्टेट में भी डेवलप होना चाह रहे हैं या लॉट्स ऑफ पीपल आर रियलिस्टिक तो उनका बाइंग ऑलरेडी देयर है ही। पहले या बिकॉज अभी एक रिसेंट अक्षर श्रीवास्तव का एक ट्वीट आया था कि देयर वाज हाँ वन हाँ 70 करोड़ का प्रॉपर्टी इन हम्म दिल्ली। या सो गुड़गांव ना हाँ, नोएडा में भी मिनिमम property value started from 70 crore onwards. And that was insane amounts. बताओ And what he suggested was दुबई में चले जाओ, आपको बुर्ज खलीफा के आसपास 4 या 5 करोड़ में डिसेंट 1 BHK या 2 BHK तो मिल ही जाएगा। बताओ इतना बाय सस्ता दैट, समझ रहे हो 5 करोड़ लाइक यू वॉन्ट गेट 5 करोड़ इन मुंबई लाइक मुंबई में या 1 BHK 5 करोड़ हार्ड है या कहाँ पर मरीन ड्राइव एरिया में नॉट पॉसिबल राइट और राइट। अहमदाबाद में 5 करोड़ में आपको 3 BHK मिल सकता है अच्छे एरिया में अच्छा, मुश्किल से 5 करोड़ में लाइक सो अहमदाबाद का टॉप एरिया ले लो आप 5 करोड़ में आपको मुश्किल से मिलेगा 2 BHK 3 BHK इतना वाह, प्रॉपर मार्केट है अपना रियल एस्टेट इंडिया का राइट। अमेजिंग तो उसके चलते हाँ नाउ अगेन आप देख लो ना वहाँ पे, whenever you buy a purchase a हम्म 4 to 5 हम्म crore property in Dubai, आपको ऑटोमेटिकली वो 10 साल की वीजा मिल जाती है which is called golden बताओ visa. awesome So you have your benefits. उसके चलते you get a lot of benefits also. You can sponsor and bring in your family members to Dubai with that हाँ visa. आपको राइट ड्राइविंग लाइसेंस इजीली मिल जाता है। I'm not entirely sure, but there are a lot of नहीं perks. नहीं ट्रू लाइक आई ऑल्सो लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो टोल्ड मी सो या इट्स ट्रू हाँ, तो ऐसे-ऐसे छोटी चीज़ें हैं व्हिच आर वेरी मच सिटीज़नशिप वो कभी नहीं देने वाले। दे आर लाइक हमारे ही लोग खत्म हो जाएँगे अगर हम सिटीज़नशिप देने लगे तो। दैट इज़ व्हाई दे वांट टू कीप राइट एवरीवन ऑन दिस वीज़ा। मैक्सिमम वीज़ा ले लो राइट राइट बट उससे ज़्यादा हम लोग नहीं देंगे। व्हिच इज़ फेयर, ठीक है मतलब अपनी कंट्री को संभाल रहे हैं। हम्म So yeah, that is the whole point कि that's how Dubai is growing and UAE as a हम्म whole is growing in this space. पवन हम्म और एक बात बोल रहे हैं, प्लीज डिस्कस अबाउट 2025 बुल रन। या भाभी बताइए। बताऊं यस पवन बुल रन देखो आएगा कि नहीं पता नहीं है पर मैं आपको बहुत ही मजे की बात बताता हूँ अगर आप समझ पाए तो अच्छी बात है कि 2025 रन भूल जाओ 24 का भूल जाओ 26 का भूल जाओ ये मान लो कि ये अभी 2024 से लेके 2035 2040 तक 10-15 साल का बुल रन चल रहा है बिटकॉइन में अगर आप बिटकॉइन समझ गए तो आपको पता चलेगा कि 10-15 साल का बुल रन है तो आप 2035 में बोलोगे कि अरे यार मैं 10 साल के लिए बिटकॉइन लेके रख दिए होते हैं और कुछ नहीं करता मैं तो क्या अलग बात होती पर अब क्या करूं तो ये वो टाइम है और लाइक वी आर दिस इज आवर ओपिनियन आफ्टर रीडिंग सम बुक्स एंड कुछ पास्ट स्टडी करने के बाद जैसे आज आप इंडिया के टेस्ला देख लो अदानी देख लो ये जो सारे स्टॉक्स थे वो सारे भागते थे लाइक this is not a financial advice but just an opinion from your good friend so bitcoin is in a bull run for the next 10 to 15 years और वो आपको रिस्क फ्री रिटर्न है यू कैन गेट एनीवेयर अराउंड 30 40 50 60% रिटर्न कोई लाइक एंड आपका पैसा सर आपके हाथ में है यू मे बी यू टैक्स इवन यू डोंट नीड टू पे टैक्सेस if you like there are some ways but like we don't want to encourage them
बिकॉज गवर्नमेंट को नहीं पसंद ये, गवर्नमेंट सबसे टैक्स खाना चाहती है। बट कहने का मतलब ये है कि ये 1 साल का बुल रन भूल जाओ, लंबा होराइजन रखो। अगर 1-2 साल का होराइजन है तो बिटकॉइन में अभी आप मत आओ, बाहर सब जगह थोड़ा बहुत ठोकर खा के आओ, तो आपको वो काम चीज़ आगे भी काम हेल्प करेगी इसमें सीखने में। बट यार कीप योर होराइजन लॉन्ग, एटलीस्ट 2-3 ईयर्स, लाइक 1 साल में पैसा बनाना, अगर आपने बना भी लिया, अगर आपने अगर 1 लाख का 50 लाख कर भी लिया क्रिप्टो में, तो आई एम नॉट श्योर कि अगर आप उसको अगर 2-3 साल तक आप कंटिन्यू भी कर पाओगे। आप फिर से 2 साल बाद फिर से यू विल गो टू दैट अमाउंट, आप 50 लाख फिर से उड़ा दोगे, क्योंकि वो बना ही इस तरह गैम्बलिंग से बना है क्रिप्टो में। सो फोकस लॉन्ग टर्म। Right. Yeah, that's वी the best. डोंट इवन नो कि आएगा कि नहीं बुल रन, राइट? लाइक 2-3 कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। I mean, अगर आप देखोगे, if you listen to everyone, bull run is actually ongoing. तो अगर आप राइट 2020 के एंड से देखोगे, 2022 के एंड से अब तक, राइट you have seen a massive upswing. 16,000 था, राइट we are at 60,000, 62,000 now. So 3-4 गुना हो चुका है पैसा आपका, तो हर इसलिए आप तब से बिटकॉइन ले रहे हो अपना, कोई भी and 2 इन्वेस्ट नहीं साल कर रहे हो, अपने पास सेल्फ कस्टडी रख रहे हो, तो 2 साल में आपका पैसा 3 गुना हो चुका है। अब 6 महीने से चलो उसी रेंज में घूम रहा है, बट लाइक देयर विल बी टाइम देन व्हेन बिटकॉइन विल जंप, एंड जब वो रुकता है, बिटकॉइन जब भागता है, तब लोग नहीं खरीदते, डरते हैं कि चलो रुकेगा फिर yeah, खरीदेंगे। वो जब रुकता है तब फिर डर जाते हैं कि यार गिरेगा गिरेगा। तो ये रिटेल माइंडसेट में मत आओ, ट्विटर hmm, देखना छोड़ दो, क्योंकि वो आपको ट्विटर में जो चल रहा है उससे रिवर्स सोचो, आप उल्टा सोचो, right. है ना? दूसरे क्वेश्चंस हैं पवन के, एंड या एनी अदर गेस्ट हु वांट टू आस्क क्वेश्चंस, हम लोग विल गेट देम एट द एंड, पहले कवर कर लेते हैं अपना। या लास्ट में देखते हैं कोल्ड वॉलेट एंड हार्वर्ड वॉलेट का। या This again, GCC is Gulf Cooperative Council, for those who are not told. So a group of countries हैं, your UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, वगैरह वगैरह. So this is another development which has happened recently, October 8th को हुई थी, where National Bank of Bahrain has launched a Bitcoin investment fund, नाइस। Bitcoin linked investment fund, which accredited investors को exposure देती है Bitcoin को with capital protection. So basically it's a fenced garden कि ठीक है आप इसमें करो, but obviously they will give your risk portfolio risk allocation, बोलेंगे कि ऐसा ऐसा है कि you need to invest बहुत कम amount, see how it goes, the usual drill in terms of how it's done. हाँ, so the GCC is Kuwait, Oman, Qatar, Saudi and UAE. वहाँ पे we are already seeing traction in UAE. Now Oman में भी there is mining going on. The only place अभी Bahrain बचा है. Bahrain has included ये product. Now you'll see others. Saudi जब आ गया and they do an announcement, and when Kuwait comes in, they do an announcement. These are big places. I read a recent news where it says $1.3 trillion सिर्फ family offices के पास है in Abu Dhabi. Abu Dhabi is a very small city in UAE. बताओ, Now, $1.3 trillion। yeah. Now सिर्फ UAE में एक छोटी सिटी में अगर इतना पैसा है, now you combine with all of the countries in GCC, is a lot of money to be poured in. अगर उसका 0.5% या 1% भी आ जाता है in the markets and they announce it, it'll be massive madness in the whole space. अगर आप देखो तो. So yeah, that's one of the promising news as by National Bank of Bahrain की. Coming to Santa Monica, it is again a city in US which has उन्होंने अब recently they've seen the interest grow. Can you play this video एक बार? आप play कर पाओगे तो अच्छा होगा. I'm just sending you this video. Yeah, I will play it. Private chat में भेजा है. So yeah, we'll just watch that video and then we'll discuss on it. Yeah, done. Can you see it? हाँ, maximize कर. Big thank you to City Manager David White for his excellent update to the City Council last night, covering some of the Santa Monica Bitcoin latest and upcoming work. Yeah, I'm playing it now.
Finally, I want to briefly provide a 90-day report on the newly formed Santa Monica Bitcoin office, approved by the council in July of this year and led by nonprofit Proof of Workforce. First, I want to extend deep gratitude to Doug Sloan and the entire city attorney's office and Melissa Spaniolo for working incredibly quickly and making sure the memorandum of understanding was signed quickly. Proof of Workforce has been preparing an education campaign in collaboration with the library, set to launch in early 2025, giving community members an opportunity to learn Bitcoin 101 and explore possible career opportunities within the industry. The Bitcoin office has seen significant interest from the public and gained impressive traction, generating more than 2 million organic views on social media, more than 100 inquiries from the public, and widespread media coverage. Several other cities have also reached out to learn more about the office's operations. The office has begun outreach and events in the community, hosting a meetup in collaboration with the Santa Monica Chamber of Commerce, and is set to present at the California Municipal Revenue and Tax Association conference this week. And on October 18th, in concurrence with LA Tech Week, Proof of Workforce and the Bitcoin office will host a Bitcoin peer-to-peer festival, a free community event from 12 to 6 p.m. on the 1200 block of the Promenade. As this office continues to grow, we'll provide regular updates on its progress, and you can find out more on our website, santamonica.gov. And I want to thank Mayor and the City Council for your indulgence this evening. Thank you. Yeah, I think he's a Bitcoiner. Peer-to-peer, mute. Yeah, I think you're mute. Oh, sorry. मैं बोल रहा हूँ eventually everyone turns a Bitcoin. अगर आप if you stay long उसकी enough. बातें देख रहे हो? Proof of workforce, peer-to-peer conference. Yeah. Nice. So this is He a knows Bitcoin. development Yeah. again. Again, इन्होंने बहुत छोटा किया था. Proof of Workforce again is a NGO, I think, who have helped them understand what Bitcoin is. And Proof of Workforce is headed by Bradley Redler, if I'm not wrong. तो इन्होंने along with Andrew Bailey and Craig, उनका second name याद नहीं आ रहा, they've written a book called Resistance Money. So for anyone who's interested in reading that book, please check it out. Yeah. It covers Bitcoin through a philosophical lens. It's not price You were action. reading that book, I think. चल रहा है वो. I haven't completed it. Oh, how is it? अच्छा है. अभी तक जितना पढ़ा है अच्छा है. It gives a different picture. You know, Okay. it gives completely different. हाँ, तो अगर आप see if you remove all your privileges, आप अंधे हो, and if you are being born in a world and you don't know where you'll be born, then आपको लगेगा is Bitcoin important or not? That is the question which they have asked in the first few chapters. Nice. And then उसका हर चीज, like every property of Bitcoin is being discussed with that lens. कि ठीक है, is censorship resistance, authoritarian regimes में कैसे चलेगा, what is the like is store of value or you know इसका price control कैसे होता है, and all the jazz. So it's a good book. बीच में अभी रुका है, but I'll continue resume. Nice. So we see a lot of this. कोई भी book पढ़ लो, like must. Every books are completely mind blowing, right? Right. Now coming to the one of the most important things, Bitcoin development. 2140. It's another non-profit organization which was recently announced at Bitcoin Amsterdam. This is co-founded by Josie Bake and Ruben. So ये दोनों are responsible for developing silent payments on Bitcoin. These two developers. And इन्होंने Amsterdam में एक support like physical office बनाया है, which will support Bitcoin development. If you go to their website, which is called 2140.deb, nice. Their main objective is to support Bitcoin research and development. And जो भी protocol पे काम कर रहे हैं, they want to give them long-term stability through employment. So for anyone who's been in Bitcoin for a long time and who's at least seen and understood what the developer ecosystem looks like, आप जानते होगे कि everyone works on grants basis and it is very challenging and you don't know, मतलब ठीक है आप project पे काम कर रहे हो with आप you know दिल जान सब लगा दे रहे हो and at the end of the day you're getting paid for it, fine. उसके बाद क्या? So they do not have a regular flow of you know assurity कि ठीक है we will keep working on this, but कल का पीछे कहाँ से आएगा types. So this is the problem which they want to solve, these two developers, and that's why they've set up this place. So do check out their website, see what they are doing, the kind of projects they're supporting. Probably if you feel like striking a conversation, if you are a developer, get in touch with them. And then, yeah, probably they can exchange ideas, help you out, whatever. I don't know.
तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस नीड्स टू बी एनकरेज्ड बिकॉज ये बहुत कम बात होती है. एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द प्राइस, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट Right. projects which are not Like Bitcoin worth it. should be the working like job as like people should be able to work around Bitcoin into Bitcoin. Yeah, जैसे हम yeah, तो कर रहे हैं like we are doing it for hobbies. It's like we are not earning anything from this right. thing, but like we expect to earn something Yeah. from it. Hmm. So And this is 2140, हाँ 2140, 2140 क्या है पता है ना? हाँ मुझे तो पता है, आप बता दो. Okay. अच्छा आप ही बता दो फिर तो आप ही बता दो सब नहीं, like अभी 2140 is the last year. I mean, it's the yes year when Bitcoin will stop giving its rewards in its blocks. तो mining rewards right. नहीं है. सारे After बिटकॉइन one आ year, जाएंगे हाँ, सर्कुलेशन में 21 मिलियन 2136 में सारे I think 1 sat चलेगा. Every 10 minutes you'll get 1 sat. बस हाँ, बस लो हो और आज 1 रुपए में 15-20 सेट्स आते हैं 17 sats मिल रहा है आपको. 17 to 18. सो अभी लाइक आफ्टर 120 इयर्स राइट Yeah, 115 साल बाद yeah. 120 साल बाद या तो बहुत टाइम है. And in between that आप देख रहे हो like विजनरी Microsoft. नेम है ना इनका लाइक गुड नेम 2140 Yeah. अच्छा चूज किया है इन्होंने. I'm sure इन्होंने they got inspired by what Samson Mao is doing. Jan 3 उन्होंने अपने कंपनी का नाम रख दिया था. तो इन्होंने सोचा जैन कि 3 क्या लास्ट है Jan 3 में ही like it started ना Bitcoin network started Jan ओके 3 2009. ओके ओके दैट्स व्हाई या 3 जनवरी ओ नाइस तो 3 इन लोगों ने जनवरी लास्ट में रख दिया 2140 या में खत्म करते हैं. नाइस 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 Uh, ओके one more. There are like two things more which are left to cover. We'll just quickly do that, and we'll get to Pavan's question. Mayor of Rockdale, Texas, writes an opinion letter on how Bitcoin mining revitalized his town. ये बोलते हैं कि the gist of all of this, आप please go and check it out. He has mentioned that we are on the cusp of a new economic renaissance, a digital energy boom, thanks to Bitcoin. Again, as this is one of the favorite topics of mine personally, because I definitely feel that mining is shunned and बोलते हैं कि like there's a lot of misconception around it. पहली बात तो right कि right बहुत right energy consume करता है and stuff. And those who actually work on this and the communities and the places and the people who realize what this is and the potential of it, उन्हें दिखता है कि कैसे you can leverage Bitcoin mining along with your needs of power. So this is something to watch out for. And ये हो रहा है. We don't need to talk much. Obviously, there are developments which keep happening. But keep an eye out on this sector as well, this part of Bitcoin as well, and not just focus on the price and दूसरे companies क्या कर रहे हैं, ETFs वगैरह. right वो तो चल ही रहा है. This part is very neglected. I feel. Obviously, you need a lot of capital for those starting the mining operations वगैरह वगैरह. But if you have extremely cheap electricity, this is something which definitely needs to be looked at in terms of business model. And जहाँ पे भी हो, if you're in India, any other part of the world, if you have cheap electricity and if you are willing to start a business, this is something which will add value. And then इसके साथ you can encourage, because it doesn't stop just at mining. You can create communities around it through your circular economy. So once you deep dive into this, then you will get to know कि क्या है. And we'll keep discussing. This is not the last time we'll be discussing about this. So. right And last but not the least, this is hilarious जो हमने देखा. Again, a disclaimer: dowry is obviously shunned and अच्छी बात नहीं है. But this is happening in Thailand, and it is funny. Where one of the families, they accepted dowry in the form of Bitcoin. So the dowry Nice. was of 1 Bitcoin value. And ऐसे लेजर उन्होंने इज देयर आई थिंक लेजर का भी आइकन रखा है इन्होंने yeah. और देख दादी माँ होशियार है बहुत ही देख रहे हो छोटे बच्चे नहीं समझ पा रहे हो दादी माँ समझ गई कि बिटकॉइन ले लो भाई Yeah. Nice. Coming to that, पवन का क्वेश्चन अभी आंसर करते हैं. Right. Yeah. Time to answer. बताओ Hardware wallet to safety. Hardware wallet to safety का क्या मतलब है? Like I did not understand, but
Yeah, like safe Well, hardware wallet. He meant to say maybe अच्छा good अच्छा. hardware wallet. Hmm. Okay. Then Hmm. I would suggest, if obviously I will talk about Bitcoin only wallets. There are others which are, you know, Ledger. जैसे अगर देखोगे, it supports other cryptocurrencies as well, which is not recommended. If you are looking at Hmm. Bitcoin only hardware wallets, you have Cold Card है, Seed Signer है, Jade है. These three things Hmm. that I'm aware of, and you can go check Hmm. it out as well. तो आपको ये ऑब्वियसली मिल जाएंगे मार्केट में, बट इट इज Hmm. ऑलवेज एडवाइजेबल, अगर आप सोच रहे हो लेने का इसका, बाय इट फ्रॉम द सोर्स, डू नॉट बाय थ्रू एक्स्ट्रा रिटेलर्स एंड स्टफ. वो आपको, Hmm. देयर कुड बी, यू नो, व्हाट इज दैट कॉल्ड, सप्लाई चेन अटैक्स एंड स्टफ. इट्स हाँ, ऑलवेज वो गुड कर टू सकता है. क्लैरिफाई. या Yeah. He can also go for seed signer, हाँ, right? बोला Seed था. signer he can build. Okay. या He can also build seed signer या from सीड साइनर scratch. अगर हो तो यू डोंट नीड एनी ऑफ द एक्स्ट्रा. Hmm. Hmm. आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, लाइक मेहनत नहीं, Yeah. लाइक ज्यादा Hmm. तामझाम नहीं करना पड़ेगा. यू कैन बिल्ड जस्ट इट बाय यूट्यूब में योरसेल्फ. सर्च करो लाइक सीड साइनर, हाउ टू बिल्ड सीड साइनर DIY. आपको या टॉप वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें आप अपना वॉलेट 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार रुपये में आप अपना वॉलेट सीड साइनर बिल्ड कर सकते हो. इट्स नॉट अ वॉलेट बट आपको ट्रांजेक्शन, इट विल हेल्प यू टू मेक अ ट्रांजेक्शन इन बिटकॉइन. एड्रेस देख सकते हो आप. और Yeah, for those who are not हम्म. aware, no wallet actually holds your Bitcoin. राइट. They just are a means to access your Bitcoin. So, agar राइट. aap, whoever's listening, who are new to this, cold wallet, hot wallet, bus wallet is not in your traditional sense. They just let you access your coins. ये जो आपके जो भी coins हैं, they are on the Bitcoin blockchain. बस ownership change होती है. Just for an example, अगर Bhavik and I are sending each other a few sats, Bhavik has a wallet, suppose hot wallet, कोई भी, he will access that wallet, जिसके थ्रू वो अपने प्राइवेट की से वो ट्रांजैक्शन साइन करेंगे, and after that, that ownership of his coins will be transferred to an address which I've given. So it's a transfer of ownership. That's what the definition is. या They are, बाकी वॉलेट they're, में लाइक दे स्टोर कीज. yeah, शब्द शब्द स्टोर करता है. एंड यू कैन आल्सो राइट इट ऑन पेपर और स्टील प्लेट. yeah. पवन, आर यू देयर? इफ यू आर लिसनिंग देन या लाइक वो अगर बाद में आपको आगे शायद देख लेंगे वो. और I डिटेल think में कुछ है तो भी बताना. या that's pretty much it is हफ्ते के लिए. There's been a lot of chatter. मुझे MicroStrategy का अगर आप ट्विटर पे देखोगे तो the conversations are off the charts. मतलब या लोग पागल हो रहे हैं. They are comparing it to the GameStop thing, which is weird because GameStop का उतना वैल्यू नहीं था. These हाँ, guys मतलब have उनके legit make some business. हाँ, अभी बिटकॉइन उनके पास एसेट है, उससे आई थिंक 2 to 3x ट्रेड हो रहा है ना टाइम्स Yeah, yeah. माइक्रोस्ट्रेटजी वैल्यूएशन. या So there's something called I do not know the NAV. concept of NAV. हाँ, आप समझा सकते हो क्या है? नेट एसेट वैल्यू में भी ऐसा कुछ है. Yeah, तो but लाइक उनके पास डिटेल में तो पता नहीं, एक तो बार थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने. सो बेसिकली वही है कि उनके पास इतने बिटकॉइन है, लाइक लेट्स से उनके पास $10 बिलियन के बिटकॉइन है. तो लाइक और उसका कुछ और प्लस प्लस दे आर ऑपरेटिंग, दे हैव सम ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम है. तो उनके पी रेशियो के हिसाब से उनकी प्राइस ट्रेड होती है, शेयर का प्राइस प्लस जितनी उनकी एसेट है उस शायद थोड़ा 10% 5% ट्रेड हो जाए. या मतलब सो जो अगर 10 मिलियन के बिटकॉइन है तो लाइक अगर वो उनके पास कोई भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो भी उनकी वैल्यू मोर देन $10 बिलियन होनी चाहिए. बट नाउ दे आर इश्यूइंग मोर शेयर्स और वो मोर लेंड करते जा रहे हैं, राइट. 0%, 2%, 5% पे पैसा लैंड करके बिटकॉइन खरीदते जा रहे हैं. सो दे विल ऑल्सो डू इट इन द फ्यूचर. सो वो एक्सपेक्टेशन में लोग उसको हाई वैल्यू कर रहे हैं. इट्स ट्रेडिंग एट 2.5x okay. 3x से उससे ट्रेड हो रहा है. सो आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ दिस कि सेलर इज सेइंग कि हम करते ही जाएंगे, बिटकॉइन लेते ही जाएंगे. सो वो मार्केट उसको पहले वैल्यू करता है. सो दैट्स व्हाट मार्केट डज. मार्केट आगे चलता है थोड़ा, फ्यूचर लाइक फॉरवर्ड लुकिंग होता है मार्केट. सो इसलिए बट अगर ये दिक्कत है, अगर अगर कुछ हो जाए अभी और लाइक बिटकॉइन जस्ट सीधा डिप होता है, मे बी उनका पता नहीं लिक्विडेशन क्या है, अराउंड 20-25 हज़ार डॉलर जाता है तो उनको दिक्कत हो, उनको दे कैन गेट द मार्जिन कॉल. ओ 330 or उनको मार्जिन 34. कॉल आ सकता है. Yeah.
ओके, सो मार्जिन कॉल आएगा तो दे जस्ट हैव टू पे द लाइक बैलेंस टू स्टे सॉल्वेंट, सो वो उनको मिल भी जाएगा. सो एंड अगर वो नीचे जाएगा तो और बाई करेंगे वो लोग, लाइक दे नो इट. बट Yeah. ये है लाइक, मैं भी सोचता हूँ कि लाइक कैन माइक्रो स्ट्रेटेजी गो बैंकरप्ट बाय डूइंग दिस. Yeah, if the price goes below 10,000, then definitely. Yeah, and it stays there for a long time, right? Yeah. It stays there for a long time. ऐसे टेम्पररी डिप्स आए तो कुछ नहीं होने वाले. Like, Right. घबरा जाएंगे obviously, but now you हम्म, have players like your BlackRocks, Fidelities, हम्म, retail आ गया है through your हम्म, क्या बोलते हैं pension funds and other places. हाँ. नहीं होगा. हर कोई ETF पूरे दुनिया में खरीदने जा रहे हैं, राइट? सो इट्स हार्ड. But yeah, the safety of their MicroStrategies coins is something which is debatable, which we've discussed. कि Coinbase पे अगर रख रहे हो पूरा, then it's like a वो भी honeypot. एक दूसरा है, Yeah. राइट. पल्लव का कमेंट है, मजा आया भाई. या Thank थैंक you, यू, अच्छा लगा, मैं मजा आया आपको. and thanks एंड for पल्लव, joining. यू आर आल्सो डूइंग गुड जॉब एट जोंगोटी. Yes, this is one more initiative that I forgot to talk about. या 2140 जैसे एम्स्टर्डम में चल रहा है. Some में there is one place जहाँ पे Pallab and two of his peers are doing this particular thing, where they are spreading news, information, education about Bitcoin. And recently they've been granted as well through HRF नाइस. to increase their initiative and efforts. So do keep an eye out, and especially the SMEs folks who want to know and learn. These guys are your go-to people. या ओके, That's it. सॉरी, आई वाज अब hide कर रहे थे क्या? डिड इट अगेन. ओके, या That's all for this week. अगले हफ्ते मिलते हैं with some other exciting news which has triggered a lot of things. या Election 3 हफ्ते में है in US. We'll see a lot of ऊंच नीच तो होगी वहां पे उस टाइम पे. And then we'll see how it pans out. फेड का I मीटिंग don't भी होगा ना, आई थिंक रिसेंटली होने वाला होगा. नवंबर में है ना? इंटरेस्ट रेट. नवंबर में. ओके, अक्टूबर में नहीं कब हो है रहा है? इस बार. नहीं, अक्टूबर में नहीं. ओके, फेड कट सितंबर, सीपीआई डाटा नवंबर. आएगा बस 15 को ओनली, ट्यूसडे को. Yeah. या दिस वीक विल बी वोलेटाइल, बट ठीक है, अगर नीचे डिप मिलता है तो अच्छी बात है. Yeah. चलिए, that's all for this week. Thank you for tuning in, and again, as always, do share and subscribe to the channel if you find this valuable. And if you have anything specific that you'd like to know, please join the live session or comment on it, and we will get back to you. चलिए, Thank you everyone for joining. Yeah, it means a lot. Bye bye. Thanks, Take care. guys. Yeah.